My experience in Subhati University was so good. I've enjoyed a lot. I've done so much fun here and I've learned a lot from here. The experience in Subhati University has been incredibly amazing for me, and hence I would say that Subhati is the best. It's like a small island in a city, and you should totally come here if you are pursuing anything. The experience of Subhati has been always wonderful. यहाँ रहना, यहाँ पे लोगों से बातें करना, टीचर से थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लेना और उनकी कभी कभी डांट सुनना. A very good afternoon to our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. G.K. Thapliyal Sir, Honorable Chief Executive Officer, Professor Dr. Shailya Raj Ma'am, expert speaker from Department of Forestry and Natural Resources, HNB Garhwal University, Dr. Lakshman S. Kandari, subject expert from Department of Education, University of Lucknow, Dr. Hemendra Kumar Singh, Dean, Faculty of Education, Swami Vivekanand Subhati University, Professor Dr. Sandeep Kumar Sir, Head, Department of Education, Faculty of Education, Swami Vivekanand Subhati University, Professor Dr. Anuj Raj Sir, Chairman of University Environment Committee, Swami Vivekanand Subhati University, Dr. Mukesh Ruhela Sir, dignitaries, teachers, and students. I extend a very warm welcome on behalf of Department of Education and University Environment Committee, Swami Vivekanand Subhati University, to everybody joining us online in today's webinar. I am Dr. Mumtaz Sheikh, Assistant Professor in Department of Education, Faculty of Education, Swami Vivekanand Subhati University, and it is a matter of great pride and privilege to have the opportunity of moderating this webinar. Today is 13th October, the International Day for Natural Disaster, and hence the topic of today's webinar is judiciously selected as Education and Training in Disaster Management, Minimizing the Risk Factors. The International Day for Disaster Reduction began in 1989 and was introduced by United Nations General Assembly to promote a global culture of risk awareness and disaster reduction. The disaster mainly has an impact on the population of low and middle income countries where the facilities for dealing with the aftermath of a disaster is not adequate. The consequences of such disaster are not only damage to property and infrastructure but also loss of precious lives. Hence, it becomes necessary to educate and train the masses for minimizing the risk factors associated with such disasters. We have the Honorable Vice Chancellor of Swami Vivekanand Subhati University, Major General Gopal Krishan Thapliyal Sir, amidst us. And we are immensely pleased to have Sir with us in this webinar. But before I invite him to speak, I would like to present his highly impressive introduction. Major General Gopal Krishan Thapliyal Sir has graduated with distinction from the erstwhile King George Medical College, now known as King George Medical University, Lucknow, in 1979. Sir is a postgraduate in oral and maxillofacial surgery from prestigious Armed Force Medical College, Pune.
He is the fellow of Indian Board of Oral and Maxillofacial Surgery, that is FIBOMS. He was commissioned in the Indian Army in 1980 and superannuated in the rank of Major General in 2015. For his distinguished service to the nation and armed forces, he was conferred with prestigious award Sena Medal by President of India on Republic Day, 26 January 2015. While serving in Indian Armed Forces for about 35 years in various capacities in India and abroad, he has received commendation cards from commanders including United Nations Peacekeeping Force Commander in Cambodia, Armed Commander, Southern and Western Commands, for his immense contribution as a clinician, researcher, and academician in the specialty of oral and maxillofacial surgery, he was conferred with the most prestigious Lifetime Achievement Award by the Association of Oral and Maxillofacial Surgeons of India in 2016. He has served as research officer at the Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences DRDO, Delhi. As an academician, he has the unique distinction of heading the dental wing at AFMC Pune and oral and maxillofacial surgery department at ADC Army of Hospital R&R, New Delhi. He has been an expert advisor to UPSC, Government of India, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, ONGC, Mumbai, King George Medical University, Lucknow for selection and promotion of faculty. He has been on the panel of recognized examiner of various universities and published many articles in national and international journals. Sir has guided a large number of postgraduate students in submitting their thesis and has also been a PhD guide to many students. Listening to such an accomplished personality would be a very enriching experience. So, without much delay, I invite our Honorable Vice Chancellor, Sir, to kindly address the audience. Please, Sir. Namaskar. Thank you, madam. You have taken a little bit more time than required to introduce me. That was not required, in fact. Anyway, so at the outset, on behalf of Swami Vivekanand Subharati University, I extend a warm welcome and thank our distinguished guest speaker for this webinar, Dr. Lakshman S. Kandari, who is the Assistant Professor at the Department of Forestry and Natural Resources, Hemwati Nandan Bahuguna Gadwal University, Srinagar, Uttarakhand. I also extend a warm welcome and thank Dr. Hamendra Kumar Singh, who is the Associate Professor, Department of Education, University of Lucknow, for having joined this webinar. And I also thank the organizing team headed by Professor Dr. Sandeep Kumar, who is the Dean Faculty of Education at Subharati University and other organizing team member. Unfortunately, Dr. Sandeep could not be available because of some domestic issues and hope he will be joining us online. Ladies and gentlemen, I also welcome all the participants who are joining this webinar from different parts of the country. This is one of the most challenging topic which we are discussing. Challenging in the sense, it's a disaster management and training
in disaster management to minimizing the risk factor? What is the role of higher education institutions like a university and any college? That role, how it is defined, and how our students are trained to keep themselves prepared and to create awareness among the society to tackle and to face the natural disasters in order to minimize the damage. When we talk disaster, so here the disaster word itself, it sends a kind of a ripple in the body and it creates a kind of a panic reaction in the mind of the people. And when generally we talk about natural disaster, where we have no control, we did not know many disasters when do they take place. But with the advent of technologies, now we are quite sure and we can predict the natural disaster and well in advance, except a few like earthquake, where the technology is not so advanced that we can predict earthquake well in advance and prepare ourselves. But otherwise, like cyclone and other issues, earlier days, if there was cyclone, there used to be a huge loss of man property and loss of life. But nowadays, you must have seen anytime there is some prediction of the cyclone or some prediction of any natural disaster, we keep ourselves ready well in advance. We prepare ourselves, and that's how we minimize the number of casualties and number of property loss. And this has happened due to the advancement in the technology and the well preparedness of the disaster management team. It's during disaster, it's not only the government, it's not only the disaster management team which has to work, but the entire society, entire population has to be involved. And how do they be involved? That requires training. And for this purpose, higher educational centers or even that secondary or junior level of training institutions can do a wonderful job by imparting education to the students how to prevent and how to prepare themselves to face the challenges, to face the disaster. This is the issue how to train and what to train and whom to train. This is the issue being tackled by our learned guest speakers, and I'm sure they will throw the lights on various issues of natural disasters plus man-made disasters also. And in such a situation, what kind of a training we should impart to our students? That issue will be tackled, issue will be discussed, deliberated, and I'm sure this deliberation will bring a very good outcome, and this outcome will help society in long run. With those words, I thank you all for joining the webinar, and particularly I thank the guest speakers and the organizing committee for organizing such webinar and choosing this topic for discussion. I wish you all the best and great success for this webinar. Jai Hind. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your kind words and appreciation. Sir, you very truly said that disaster is something that we all would like to avoid. And yes,
We agree with you, sir, that nowadays we are better prepared for various types of disasters thanks to advances in sciences and technologies. Sir, very true that the masses should be trained and educated to face such types of disasters. Sir, listening to you was indeed a very enriching experience, and the audiences must have immensely benefited from your valuable words. Thank you, sir. Now, I request Dr. Vibha Lakshmi, Associate Professor, Department of Education, Faculty of Education, Swami Vivekanand Subharti University, to kindly introduce the highly knowledgeable and experienced subject expert, Dr. Lakshman S. Kandari, to the audience and invite him to shed light on today's topic. Please, Vibha ma'am. Thank you, Dr. Mumtaz Sheikh. I feel honored to introduce the expert speaker of today's webinar, Dr. Lakshman S. Kandari. Sir is an assistant professor in Department of Forestry and Natural Resources, School of Agriculture and Allied Sciences, HNB, Garhwal University, Uttarakhand. Sir is highly educated with an MSc degree as well as PhD from HNB Garhwal University, Uttarakhand. His areas of specialization are seed biology for medicinal and aromatics plants as well as natural resource management and sustainable forest management. Sir is a multidimensional personality and holds numerous positions. He is NSS program officer at BCC Srinagar campus. He is also member of Green Master Plan for University campus. In addition to this, he is the nodal officer for School of Agriculture and Allied Sciences as well as the coordinator for the Department of Forestry and Natural Sciences. With this brief introduction, I now invite Dr. Lakshman S. Kandari sir for giving his presentation. Please, sir. Hello. Hello. Yes. I'm Yes, audible? sir. Yes. Yes, sir. So, yeah, sorry for the disturbance. Actually, here the internet is not working properly. So, should I start now? Yes, sir. Sure, sir. Hello. Yes, sure, sir. Hello. Continue, sir. Yeah. Good afternoon. Uh, to good afternoon to the Vice Chancellor, sir, and Professor Anuj Raj, Head of Department of Education from Swami Vivekanand Bharat University, and the Mumtaz Madam for giving me this opportunity to present my today's topic on disaster management. And
First of all, just I want to say that what is today on the occasion of International Day of Disaster. Uh, as we know that by UN 13 October every year declared as International Day for Disaster Risk Reduction Day. Just I want to first of all, I just want to share my presentation now. Share screen. Hello. My visible map. Hello, is visible? No, sir. So, International Days for Disaster 13 October 20 year. And so today's topic is education and training in disaster management, minimizing the risk factors and time and cause of disaster. First, have to know the word because disaster itself word make us very because think no need to be panic because we will not take the major step disaster management or whatever. So take capacity to reduce vulnerability for disaster and which a community. Second is hazards, cloud burst, that is hazards. And vulnerabilities or vulnerable are those objectivity plus hazard and the retaining capacity of that object is decide the disaster. Suppose there was a cloud burst in the Kedarnath in the 2013 and uh, the object which came on the way to the those flood are vulnerable and the capacity to retain those vulnerable is called disaster. So, in a simple language, if it says disaster, it is a serious disruption of the functioning of a community that exceeds its capacity to cope using its own resources. So, disaster is means that a function of a community to maintain the capacity or to cope up with the its resources serious disruption of the function of a community or a society which involves widespread human, material, economic, or environmental impact that exceed the ability of the affected community or society to cope using its own resources. Disasters can be caused by natural or man-made and technological hazards, as well as various factors that influence the exposure and vulnerability of a community. So, according to the International Federation of Red Cross and Red Crescent Society, a disaster occurs when hazard impact on the vulnerable people. I told you means if you are more vulnerable, you are more prone to the hazards, and that hazards impact on the vulnerable, then the disaster occurs. So the combination of hazards, vulnerability, and inability to reduce the potential negative consequences of risk result in the disaster. Disasters are also classified as per origin into natural or man-made disaster. So man-made disaster, as we know that all this solid waste management, nuclear waste, and everything that our human beings are doing nowadays. As per severity, disasters can be classified as minor and major. In 1919, in the chairmanship of J.C. Pant in India, high power committee was constituted for the disaster management and they categorized 30 odd disasters in the country, like those disasters which are related to water and climate are floods, cyclone, tornadoes, hailstorm, cloudburst, heat wave, snow avalanches, drought, sea erosion, thunder, lightning, etc. Those disasters related to geological is landslide and mud flows, earthquake, large fires, dam fires, and dump fires, mine fires, biological
We are very sorry because there is some transmission issue. Maybe the data is not working properly. So right now, I will ask our chairman of the University Environment Committee, Swami Vivekanand Subharti University, Dr. Mukesh Ruhela, a very well informed and a very well read personality, to kindly address the audience. So I request and Dr. Mukesh Ruhela sir. Sir, please elaborate the topic of today's webinar. Jai Hind, respected Honorable Vice Chancellor sir, Honorable respected HOD or Dean Education, all the faculty members and dear listeners. As the today's topic is regarding the disaster management and training, basically disaster management is any unfortunate extreme event or hazard which cause great damage to the human beings, which generally we can say the controllable things by the nature, but not only nature, these disasters can be done by the man-made activity also. So when we classify it, it can be a disaster, natural disaster, and when it's a very common thing, each and everybody know about this that all the natural disasters by the nature only, and the man-made is created by the man only. But because as I am the chairman of University Environment Committee, I will correlate this disaster with nature, and as we are suffering lot of things with nature, and this influenced by the human beings is creating some disaster or increasing the intensity of the disaster. Like as everything is increasing in the negative way, that like any urbanization, globalization, and industrialization, lots of so many things are there. And with these things, we have very much destroyed our nature. And disaster is because of, we can say, because of this only the increment of disaster is going on. Intensity is frequent where the things was very quiet, or somehow we can say that the disaster may are coming at the worst condition by the nature, but we have replicated it. Like with this activity, like inventing the global problems like global warming, acid rain, ozone layer depletion, and as we can say that global warming is replicating the disaster also. Like when global warming is increasing, there is a relation between the
atmospheric changes, biodiversity changes, and wind circulation pattern changes because of this only. And as these happens in the nature, it will automatically replicate the natural disaster. And the man-made disaster is war. Everything is there. There are lots of conflicts going on one country to other, and lots of other things. Or another things, the greediness of human being is increasing this problem also, because we are exploiting each and everything by the nature, and nature is doing everything, but there is a limit. Now we have to increase ourselves, we have to develop ourselves, and we think about the nature so that we can maintain the delicate balance of nature. If we are able to maintain the delicate balance of nature, we will definitely increase the other things also. When we talk about the disaster management and training, nowadays it's a very essential thing. Each and every person should know how we can cope up this disaster, and disaster management can minimize the intensity of the disaster. We cannot stop the disaster, but by the help of management, we will be able to reduce the effects of that disaster so that we will be able to control the intensity of the disaster. So many countries have already adopted this, that they are having the curriculum in which the disaster management is a compulsory subject, like Japan, where frequently earthquakes are coming. Northeast, we can say that is Bengal side of it, there flood problems there. Presently, we are suffering lots of other things also. But if disaster management will be there, or each and every person will able to know about how we can maintain, or we can say at the time of disaster, how we will be cope of this disaster, or how we can reduce the effect of that disaster, will be able to maintain each and everything. Basically, when we talk about the disaster management, recovery, or uh, everything will be there. But basically, three major aspects of the disaster management: pre-disaster, during disaster, and post-disaster. Basically, these are the things where the disasters are coming frequently. But these things, again, if pre-disaster means we will be able to uh, we are having lots of things so that the coming disaster can be maintained by the authority. During disaster, what will we do in the during the disaster, what we have to do, and how we can cope up, or how we will be resettlement ourselves after the completion of the disaster. So these are all coming this very short way. I am explaining it in a short way because we are having eminent speaker regarding who will speak on the different aspect of this disaster management also. But I am giving a brief only. And means the disaster management is a very important thing for each and every person, and we should think about the disaster management, and we have to uh, learn how we can reduce the intensity of disaster. With this word, I would like to thank all the dignitaries and all the speakers and listeners. Thank you very much. Jai Hind.
Thank you so much, Mukesh sir. Thank you very much for this wonderful talk on today's topic. You had highlighted all the important aspects related to the topic. Listening to you was a highly informative experience. Next in the series of highly informative lectures, we have the next one by Dr. Hemendra Kumar Singh. Sir is an assistant professor in Department of Education of University of Lucknow. Sir is highly educated with an MA degree in political science and Hindi as well PhD in education. He even has a diploma degree in electrical engineering. He has a number of research papers published in national and international journals to his credit. He got published 12 books as well as edited numerous other books. He is a dynamic personality and has participated in several workshops, seminars, conferences, etc. at national as well as international level. Sir, I request you to please address the audience. Please, sir. धन्यवाद मैडम, आभासी मंच पर आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आप सभी व्यवस्था में जितने लोग जुड़े हैं उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने जो आज वेबिनार का टॉपिक रखा है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिमाइजिंग द रिस्क फैक्टर्स, ये स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन द्वारा ये आयोजित वेबिनार में आपने मुझे आमंत्रित किया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सभी के प्रति शुक्रगुजार हूं। कार्यक्रम का स्वागत जिन्हें करना था डॉक्टर संदीप जी, जो किन्हीं कारणों सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे अच्छा लगा मुझे कि दो चीजें होती हैं व्यवस्था को संचालित करने के लिए, एक शिक्षा और दूसरा चिकित्सा। और अपने स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के जो वर्तमान वाइस चांसलर हैं, आपका चिकित्सा के क्षेत्र में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप बड़े पदों पर रहे हैं और बड़े जिम्मेदारियों को आपने निभाया है और आज आप इस विश्वविद्यालय के कार्य को देख रहे हैं। अभी सर मैं आपको सुन रहा था, जो आपका विराट अनुभव देखा और जो आपको सुनने में मुझे मिला, मुझे लगा कि आपके बोलने के बाद किसी भी वक्ता को बोलना वैसा ही है जैसे सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। आपने बड़े संक्षेप में बहुत बड़ी बातें कह दिया, शायद वो आपके अनुभव ने आपसे कहलवाया है और मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे आपके इन बातों को सुनने का अवसर मिला है। सर मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं और आपके प्रति कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला और आपके इस प्रेसिडेंशियल एड्रेस को भी मैं सुन पाया। अभी डॉक्टर लक्ष्मण एस पुंडेरी जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने भी बड़े बारीकी से अपने विषय को रखा है और मैं सबसे अधिक शुक्रगुजार हूँ अपने मित्र डॉक्टर अनुज राज, जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, जो कि बड़े ही विनम्र स्वभाव के हैं। और जब उन्होंने मुझसे चर्चा किया कि सर ये 13 तारीख को एक लेक्चर है आपका, इसमें यदि अपनी बातें आप रखें तो अच्छा लगेगा, तो मेरा इस विषय से, हालांकि मेरी कोई ना पकड़ है ना पैठ है, लेकिन उनकी बातों को मैं टाल नहीं सका, क्योंकि जो कार्य कोई नहीं कर पाता वो एजुकेशन के लोगों को मिलता है और एजुकेशन के लोग किसी कार्य को ना नहीं कहते हैं और हर कार्य को वो जितनी भी दिक्कतें हैं उसका समाधान निकालना जानते हैं। जैसे भी आपने पूर्व में देखा कि एक बड़ी महामारी, बड़ी आपदा हमारे देश में आ गई थी, लेकिन जो चुनौती हमारे सामने थी उसमें अनेक संभावनाएं भी खोजी गई और उन संभावनाओं को खोजने के बाद आज हम सफल हुए और इस बड़ी आपदा, इस बड़ी महामारी से लगभग हम निजात पा चुके हैं और फिर से कमोबेश एक सामान्य स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। तो मैं डॉक्टर अनुराज के प्रति भी धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपने मुझे अवसर दिया और इतने बड़े विद्वानों के बीच में मैं अपनी बात कह सकता हूं। और मैडम ने मेरा परिचय सब बता दिया है, एक थोड़ी सी उनसे बच्चे बताने में भूल हो गई है। मैं अभी एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में हूँ। मैडम ने असिस्टेंट बोल दिया, शायद अच्छा है, कोई बात नहीं, असिस्टेंट से आदमी एसोसिएट होता है, फिर प्रोफेसर होता है, कोई बात नहीं। मैं अपनी बातों को अब सीधे फिर शुरू करता हूँ। जैसा मुझे टॉपिक दिया गया है डिजास्टर रिस्क रिड्यूसिंग मैनेजमेंट।
आपदा जोखिम कम करने वाला प्रबंधन। आपदाएं आती रहती हैं, वो अपने समयानुसार आएंगी, उन्हें रोका नहीं जा सकता है, उनका एक चक्र होता है, ठीक वैसे ही जैसे घड़ी की सुई चलती है और 1 बजे से शुरू होती है, 1 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, फिर वो चक्रानुसार चलता रहता है, उसे हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जैसा आपदा को यदि शाब्दिक रूप से स्पष्ट करें तो ऐसी घटना जिसे मानव एवं प्रकृति का बुरा हो उसे आपदा कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में डिजास्टर नाम दिया गया है। इसे रोका नहीं जा सकता, वो चक्र के अनुसार आएगा ही, लेकिन उसे कम किया जा सकता है। संसाधनों के माध्यम से कम किया जा सकता है, सोच के माध्यम से कम किया जा सकता है, तर्कों के माध्यम से कम किया जा सकता है, तथ्य के माध्यम से कम किया जा सकता है। वो आपदाएं हैं क्या? जैसे बादल का फटना, लैंडस्लाइड होना, अर्थक्वेक का आना, फ्लड का आना, साइक्लोन का आना, ये आएंगे। पीछे आपने देखा है ये आई हैं और आगे भी आने से हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कम कर सकते हैं। वो कम कैसे कर सकते हैं? आपदा को रोका बिल्कुल नहीं जा सकता है, परंतु उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। कम कैसे कर सकते हैं? जिससे मनुष्य के जान माल की बहुत अधिक क्षति न हो। ऐसा हम क्या करें जिससे आपदा आने पर इसके प्रभाव को कम किया जा सकते? ये एक ह्यूमन बीइंग होने के कारण, मनुष्य होने के कारण हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ये बार बार जो आपदाएं आती रही, बार बार जो डिजास्टर होता रहा, उसके लिए फिर 13 अक्टूबर का जो आज का दिन है वो इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर के रूप में ये मनाने की शुरू हुई 1989 से। एक बात मैं और आपसे बताना चाहूंगा कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले धरा पे आती है, वसुंधरा पे आती है। और आज 13 तारीख का दिन है, करवा चौथ का व्रत है और हमारी माताएं और बहनें व्रत हैं अपने सुहाग की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और सबकी समृद्धि के लिए। और इत्तेफाक से आज ही के दिन डिजास्टर डे भी हम मना रहे हैं। तो जब भी कोई आपदाएं आती हैं, माताएं सबसे पहले उसे स्वीकार करती हैं, क्योंकि उन्हें चुनौतियां स्वीकार करने की आदत है और लोगों की रक्षा करना उनके स्वभाव में रहा है। तो एक संजोग है कि आज करवा चौथ का व्रत माताएं और बहनें हैं और इस वसुंधरा पे जितने भी संकट आए, इस धरा पे जितने भी संकट आए हैं, इस धरती ने बखूबी झेला है और उस संकट से, उन आपदाओं से निजात भी पाया है। जो डिजास्टर है उस होता है, एक मानव का नुकसान होता है, दूसरे हमारे जो पदार्थ है, जो सामग्री है, जो संसाधन है, जो भवन है, जो हमारी सारी संपदाएं हैं, एक तो उसका नुकसान होता है। तीसरा हमारी इकोनॉमी सबसे अधिक प्रभावित होती है, माने कहीं ना कहीं से सबसे अधिक हम आर्थिक रूप से क्षति के
Sir, please continue, sir. ओके, थैंक यू। तो 1931 की मैं बात कर रहा था कि चाइना जब फ्लड आया था उसमें लगभग 4 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा दिए थे। उसी तरह 1970 की यदि बात करें हम तो बांग्लादेश में जो साइक्लोन आया था उससे 5 लाख से अधिक जाने गई थी। और लेटेस्ट में यदि हम कुछ वर्षों की यदि पहले की बात करें तो 2004 में जब सुनामी आया तो 2,75,000 से अधिक लोगों की जान चली गई। जब सुनामी आया तो सुनामी में जितने भी हम पढ़े लिखे लोग थे, जितने भी सूटेड बूटेड लोग थे, जितने भी विज्ञान तकनीकी और शिक्षा से बिल्कुल समृद्ध लोग थे, शायद सबसे अधिक जान माल की उन्हीं की हुई। लेकिन इंडोनेशिया इससे सबसे अधिक प्रभाव हुआ। लेकिन जितने लोग पढ़े लिखे नहीं थे वो पेड़ों पर जाकर के चढ़ गए, पहाड़ों पर चले गए, अर्थात उन्हें आभास हो गया कि ऐसी आपदा आने वाली है, ऐसी समस्या आने वाली है। इस डिजास्टर का उन्हें अपने आप ही आभास हो गया और उससे बहुत हद तक उनका जान माल बच पाया था। हालांकि एक इत्तेफाक की स्थिति है। नेचुरल डिजास्टर के कारण प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। एक औसत रेशियो है कि प्रतिवर्ष लगभग ये 50-60 हजार लोगों की इस नेचुरल माने जो प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं इससे मृत्यु होती रहती है। एक लगभग ये क्रमशः बना हुआ है। और 2001 से 2019 तक लगभग 7,348 मेजर डिजास्टर आ चुके हैं किसी न किसी रूप में, चाहे बाढ़ के रूप में, चाहे भूकंप के रूप में, चाहे वो जिस भी रूपों में ये आ चुके हैं जिसका हमने किसी न किसी तरह से सामना किया है और उससे लगभग हमें निजात मिला है। तब से फिर ये डिसाइड किया गया कि प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर 1989 से ये डिसाइड हुआ कि हम इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन डे के रूप में मनाया जाने की एक क्रम, एक व्यवस्था शुरू हुई। उसके बाद फिर 1 जून 2016 को भारत के जो तत्कालीन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट की शुरुआत हुई कि अब ये समस्याएं तो आती रहेंगी, क्यों न इन समस्याओं के प्रबंधन को अपने व्यवहार में हम सम्मिलित करें, क्यों न इसके निजात पाने के लिए ये समस्या किसी एक की न रहे, ये समस्या बल्कि सबकी हो जाए, सब लोग मिलजुल करके इसके सामना करें। कि मैं उनको फिर आभार व्यक्त करता हूं अपने पूर्व प्रधानमंत्री जो बड़े दूरदृष्टा थे, उन्हीं से डिजास्टर मैनेजमेंट की शुरुआत किया और 2005 से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हो गया। तभी से ये अधिनियम के रूप में बन गया। उसके बाद सेंडई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030 का जो मूल उद्देश्य है वो 2015 से 2030 तक हेल्थ, इकोनॉमी, प्रॉपर्टी, स्वास्थ्य, हेल्थ, इकोनॉमी, प्रॉपर्टी और एनवायरमेंट को हुए नुकसान से बचाने के लिए लैंड, प्रॉपर्टी एंड एनवायरमेंट को किस तरह से हम बचाए सकें। अर्थात जो आपदाएं आ रही हैं, जो डिजास्टर हो रहे हैं, उन्हें रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। हम जो स्वास्थ्य हमारा खराब हो जा रहा है, जो बीमारियों से हम घिर जा रहे हैं और जो हमारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण हमारा प्रभावित हो जा रहा है, उसे फिर से कैसे बचा सकते हैं। जैसे एक हरित जगह था, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, वहां जाकर के लोगों ने अपने घर मकान बना लिया और पेड़ पौधे जितने थे सबको उन्होंने काट दिए। जब पेड़ पौधे सबको उन्होंने काट दिया तो ऐसी स्थिति में वहां पर गैसेस से निकलेंगी, पोल्यूशन तो होंगी, लेकिन उसे कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। फिर वहां पे जो चारों तरफ जो ग्रीनरी एरिया है, वहां की जो स्थिति होगी, जब वहां पे एयर होगा, जो वहां पे खाली होगा, वो चीजें वहां पर प्रेशर बनेंगी। ऐसी स्थिति में फिर वहीं पर अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात ऐसी आपदाओं को निमंत्रण हमने खुद दिया है, किसी और ने नहीं दिया है। इन
मैं जुड़ गया हूँ मैडम? यस सर, यस सर। जी जी मैम, क्षमा करिएगा। मैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल की मैं बात कर रहा था कि आपदा प्रबंधन जो चक्र होता है उसमें प्रिपरेशन माने आपदा के आने के पहले हम किस प्रकार की तैयारी करके रखते हैं, अर्थात उसका पहले से हमको मेंटली प्रिपरेशन होना चाहिए कि हम क्या करें जिससे उस आपदा का हम सामना कर सकें। दूसरा होता है रिस्पॉन्स। जब आपदा आती है तो हम किस प्रकार रिएक्ट करते हैं। कभी कभी उसको बहुत एकदम तनावग्रस्त हो जाते हैं और कभी कभी उसको उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम तैयारी करते हैं, जिससे बड़ी भी आपदा हमारी वो छोटी हो जाती है। और उसके बाद का रिकवरी, आपदा के बाद हम कैसे उबर पाए, अर्थात जो बाढ़ या बीमारियां या इस तरह की जो चीजें होती है उससे कैसे हम उबर पाते हैं, कैसे हम निकल पाते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि कोविड-19 जब भारत में आया तो आने के पहले ही भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भाप लिया स्थिति को कि विकट स्थिति होने वाली है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले उन्होंने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन करने से क्या रहा कि जो जहां रहा, जैसे रहा, जिस स्थिति रहा, वो चीजें वहीं पर रुक गई, वो प्रवाहित होने से बची। अर्थात इसके लिए सबसे पहले इन्होंने देखिए ये दिया। तो कोरोना जो था कोविड-19 आने के पहले सबसे पहले लॉकडाउन लगा दिया गया, ये हमारी अपनी थी। फिर तैयारी क्या किया उसके लिए, फिर महामारी तो आ गई, कोविड आ गया, 19 आ गई, कोरोना आ गया। अब उसके लिए क्या करना था, पीपीटी किट का हमको अरेंजमेंट करना था, हैंड ग्लव्स का अरेंजमेंट करना था, सैनिटाइजर का अरेंज करना था, लोगों की आपस में दूरी बनाए रखनी थी। ये चीजें ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी ये था, लेकिन हमको एक बहुत बड़े मात्रा में पीपीटी किट की जरूरत पड़ गई थी जो लोगों को हम दे करके जान माल बचा सकें। हैंड ग्लव्स की जरूरत थी जो लोग पहुंच करके उस संक्रमण को रोक सकें। सैनिटाइजर की बहुत अधिक जरूरत पड़ी जो सैनिटाइजर का लोग प्रयोग करके इसे हम रोक सकें। आपस में सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत थी, 2 गज की दूरी जीवन है जरूरी, मास्क है जरूरी, इस तरह से तमाम स्लोगन डेवलप हुए जो लोगों ने अपने व्यवहार में। उसके लिए फिर क्या जरूरत थी, अच्छी डाइट लेना जिससे इम्यूनिटी पावर को ठीक रखा जा सके। आपने देखा होगा इसमें जितने मजदूर वर्ग थे, जितने लेबर क्लास थे, उनकी मौतें अपेक्षाकृत कम हुई। कारण क्या था कि वो श्रम कार्य करते थे, श्रम कार्य करने से उनकी इम्यूनिटी अपने आप डेवलप हो जाया करती है। इम्यूनिटी उनकी अपने आप डेवलप हो जाया करती है, ऐसी स्थिति में बीमारियां अपेक्षाकृत उन पर अटैक कम कर पाई, या ये कह लीजिए कि बीमारियों पे उनकी इम्यूनिटी पावर भारी पड़ी, जिससे जान माल की उनकी सुरक्षा रही। तो ऐसे आपदा का निजात वो स्वयं पा सके। उसके बाद फिर स्थिति आती है कि रिस्क असेसमेंट, खतरे का निरीक्षण करना। मीन्स ये बीमारी एकाएक आई, स्विच हमने ऑन किया पंखा चलने लगा, स्विच हमने ऑफ किया पंखा बंद किया, ऐसा नहीं हो सकता है। बीमारी धीरे धीरे एंट्री की और बीमारी धीरे धीरे जाएगी। एंट्री की तो चुनौती का सामना और जा रही है तो उससे भी जो अनेक और व्याधि हो रहे हैं, जो अन्य समस्याएं हो रही है, उनका बारीक से हमें निरीक्षण करना, जिससे उसके बाद जो समस्याएं आने वाली हैं उससे भी हम निजात पा सकें। अभी जैसे आपकी बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में लगभग 18 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। आप सोच लीजिए कि जो तटीय इलाकों पर रहते होंगे, जिनके पास कोई साधन नहीं है, कुछ मिल नहीं पा रहा है, उनका कितना इस समय जीवन कठिन होगा। अब उसके लिए निजात पाने की क्या जरूरत थी कि तटीय की न जो इलाके हैं उनके बीच से ऐसे रास्ते निकाले जाएं जिससे जल भी निकल जाए और उनका नुकसान भी ना हो। लेकिन कहना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन काम है। इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, तब जाकर के ऐसी समस्याओं का निजात हो सकता है। वरना ये बाढ़ हर वर्ष आती है और हर वर्ष जो तटीय इलाके के लोग हैं उनका जीवन बड़ा ही दुर्गम और कठिन हो जाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ बाढ़ बहुत अधिक आती है, जहाँ बाढ़ बहुत अधिक आती है तो इसलिए क्या करेंगे, उनके लिए बाढ़ आने के पहले उनके रहने का हम इंतजाम करेंगे, सरकार से अपेक्षाएं करेंगे, जिला स्तर पर अपेक्षाएं करेंगे, स्थानीय निकाय पर जो सक्षम लोग हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, उनसे हम अपेक्षाएं करेंगे कि वो इसको किसी तरह से कम कर सके या उनको जितना अधिक से अधिक हो सकता है उन आपदा पीड़ितों को राहत दे सके। यदि आपदा आने के पहले हम इस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण करें जिससे आपदा का प्रभाव कम किया जाता है, रोका तो नहीं जा सकता है लेकिन कम किया जाता है, उसके क्या है स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना होगा जिससे वहां पे इसका प्रभाव कम पड़े और वो बाढ़ का पानी निकल जाए और उनकी जान माल की रक्षा हो सके। दूसरा और क्या हो सकता है, यदि हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो अपनी पढ़ाई लिखाई का उपयोग वहां तक कैसे कर सकते हैं, तो आपदा की क्षति से बचने के लिए हम गाड़ी, घर या अपने संपत्ति
संपत्ति का इंश्योरेंस करवा ले जिससे क्षति से बचा जा सके। सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या ऐसे ढेर सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, यदि छोटी कुछ धनराशि देकर के उसका इंश्योरेंस हम करा सकते हैं तो उस आपदा के बाद अपनी क्षतिपूर्ति के लिए हम दावा कर सकते हैं और सीधे क्षति से हम बच सकते हैं और उसकी हम भरपाई कर सकते हैं, क्लेम ले सकते हैं। ये सरकार की अपनी व्यवस्था है। हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा इंसान को बीमारी से काफी राहत हो जाती है। जैसे हमें आपदा कोई बीमारी आ गई तो 10 लाख 20 रुपए का 10 लाख 20 लाख रुपए का खर्च है, किसी व्यक्ति के पास सामान्य रूप से इतना पैसा नहीं होता है कि वो उसका इलाज करा सके। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस यदि हमने करा रखा है तो कुछ उसकी धनराशि आती है 3 महीने 6 महीने या 1 साल पे। यदि हम कुछ हजार रुपए उसकी धनराशि अपना किस्त पे कर रहे हैं तो बदले में 5 लाख 10 लाख 20 लाख का यदि हमारे ऊपर कोई आपदा आ भी गई, कोई बीमारी आ गई, कोई संकट आ गया, जैसे उस समय डेंगू बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, लाखों लाखों रुपए से खर्च हो जा रहे हैं, तमाम ऐसे लोग हैं सामर्थ्यवान नहीं है जो कि बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग यदि हेल्थ इंश्योरेंस लिए रहेंगे उनके लिए सुविधा होगी, ऐसे वो बीमारियों से ऐसे आपदाओं से वो बच सकते हैं। भविष्य में आपदा आने के पहले उसकी तैयारी रखना जिससे आपदा का प्रभाव कम पड़े। आपदाएं भविष्य में भी आएंगी, पीछे भी आएंगे, आज भी हमारे सामने बाढ़ के रूप में जैसा बता रहे हैं 18 जिले प्रभावित हो रहे हैं, आगे भी आएंगी, लेकिन उसके प्रभाव को हम कम कैसे कर सके यदि इसके लिए हम प्रिपरेशन रखेंगे, तैयारी करेंगे तो बहुत हद तक उससे हम निजात पा सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत स्ट्रॉन्ग इस समय डेवलप हो गई है, इससे हम आपदा आने के पहले आपदा की जानकारी हमें मिल सकता है। अभी आपने देखा होगा, मैं जिस लखनऊ शहर में मैं रहता हूँ, यहाँ पर पिछले 10 तारीख को भीषण बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि सारे जितने भी पूरा थोड़ा जो नीचे वाले इलाके हैं, जानकीपुरम में आने जैसे शहर के इलाके पूरी तरह से डूब गए। फिर सरकार ने घोषणा किया, जो भी मौसम वैज्ञानिक थे, कि ऐसे तभी और भी बारिश हो सकती है, लिहाजा 10 और 11 को पूरी तरह से अवकाश कर दिया गया। मीन्स हम ऐसी संभावनाओं से निजात पाने के लिए जो जहां तो से वही रोक दिया गया, शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी गई, कार्यालय बंद कर दिए गए, जिससे जान माल की क्षति हो सके, ये एक बेहतर टेक्नोलॉजी से संभव हो पाया, जिससे हमें पूर्व में सूचना मिल गई कि ऐसी स्थितियां होनी है। ऐसे जो बारिश होते हैं, जो चक्रवात होते हैं, उनसे भी निजात हम पा सकते हैं, बशर्ते हमको पहले से प्री इंफॉर्मेशन यदि मिल जाए तब। किसी क्षेत्र में बाढ़ आने वाला है तो उस क्षेत्र को पहले से खाली करवा लिया जाए। यदि लगता है कि यहाँ पे बाढ़ आने वाला है, ये क्षेत्र इसके पहले भी प्रभावित होता रहा है, तो वहां पर प्रॉपर जिलाधिकारी के माध्यम से एक इंफॉर्मेशन दे दिया जाए कि भाई ये इस क्षेत्र को खाली कर दिया जाए। उससे भी जान माल को बहुत अधिक बचाया जा सकता है, बस थोड़ी सी उसके लिए सुरक्षा की जरूरत है और अलर्ट रहने की जरूरत है। आगे यदि हम बात करें तो प्लान फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, जोखिम आने के पहले हमने उससे पहले ही भाप लिया कि यह रिस्क किस प्रकार का है। जैसे कोविड-19 यदि आया तो कोविड-19 एकाएक नहीं आ गया, धीरे धीरे आया, और केवल भारत में नहीं आ गया, पूरे दुनिया में आ गया। लेकिन भारत के लोगों ने जिस तरह से अपनी सत्ता का, अपने प्रशासन का, अपनी व्यवस्था का, अपने लीडर के निर्देश का पालन किया, शायद यही कारण था कि भारत में जान माल की क्षति सबसे कम हुई दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले। दुनिया के अन्य देशों ने सिर्फ बहुत लाइटली लिया, जो बहुत विकसित देश है, अमेरिका जैसे देश ने भी बहुत लाइटली लिया, जिससे वहां पर जान माल की बहुत अधिक क्षति हुई। हमारे यहाँ अन्य जगह लाशों को कोई पहचानने वाला नहीं था, हमारे यहाँ संवेदना जीवित थी, लोगों के प्रति एक आपसी प्रेम भाव था, किसी ने किसी के प्रति क्षति नहीं होने दिए, हर लोग बढ़ चढ़ करके भागीदारी अपनी सुनिश्चित की है। जो लोग गांव से शहरों में नौकरी करने के लिए गए थे, वो सारे शहरों के लोग गांव में आए, और गांव के लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया, उनका सम्मान किया, क्योंकि जो लोग मिट्टी से जुड़े हुए थे, फिर आकर के, और आज यदि एक सामान्य आंकड़ा यदि हम देखें तो लगभग 30 से 40% लोग जो भी अपने वतन में वापस आए, गांव में वापस आए, वो गांव में ही पशुपालन का काम कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं। ढेर सारे ऐसे उद्योग धंधे हैं गांव में जिसको कर रहे हैं, वो लौट करके वापस फिर इंडस्ट्री उसकी तरफ नहीं गए, अर्थात गांव में उन्होंने इंडस्ट्री को डेवलप किया, और गांव में जो खुद नौकरी के लिए गए थे, खुद कार्य किया, खुद एम्प्लॉयर बन करके अन्य लोगों को भी रोजगार दिया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे सामने समस्याएं थी, उसको हम चुनौतियों के रूप में स्वीकार किए और आपदा को अवसर में बदला। आपदा को अवसर में बदल करके जो लोग कल बेरोजगार थे, उन्हें हमने रोजगार दिया।
ये एक बड़ी चुनौती थी कि हमारे ऊपर आपदा आई, बल्कि हम विपत्ति में घिर नहीं गए, सर पकड़ के बैठ नहीं गए, बल्कि उसका सामना किया, उसका मुकाबला किया, और अब फिर से सारे लोग पुनः अपने प्रीवियस पोजीशन में आ गए हैं, लगभग दिनचर्या सबकी सामान्य शुरू हो गई। अब यदि हमारी जो आपदा आ ही गई तो हमारी प्राथमिकताएं क्या होगी, माने हम प्रायोरिटी के रूप में क्या रखेंगे? केवल अपनी आवश्यकताओं को देखेंगे कि हम सुरक्षित रहें, हम बेहतर रहें, अर्थात स्वांत सुखाय सर्वे भवन्ति सुखिनः, इस धरा पे जितने लोग हैं, इस वसुंधरा पे जितने लोग हैं, सभी सुखी रहें, इसकी कामना के साथ, इस मंगल कामना के साथ यदि हमारी ये भावना रहती है, हम दूसरे के प्रति ऐसा सोचते हैं, शायद तभी सभी का कल्याण होगा, और जब सबका कल्याण होगा तो अपना भी कल्याण होगा। वर्तमान प्रधानमंत्री जी भी बहुत अच्छी बात कहते हैं, सबका साथ और सबका विकास। ये तभी संभव है जब सबको हम साथ लेकर के चलेंगे। इंडिविजुअल यदि हम चलते हैं, इंडिविजुअल एक संदेश तो दे सकते हैं, लेकिन यदि सबको साथ लेकर के चलते हैं तो सबका विकास होना यहाँ पे तय। मनुष्य की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। बेसिक नीड्स है, हर व्यक्ति की जरूरत है कि हमें पेट भरने के लिए खाना मिल जाए, और तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए, और रहने के लिए एक छत मिल जाए। इस सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, सरकार इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है। आपने देखा होगा कि इस कोविड पीरियड में महीने में 2-2 बार लोगों को गेहूं, चावल, आटा, दाल, चीनी सरकार देती रही, किसी प्रकार का उनसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया गया। मैं शुक्रगुजार हूं सरकार के प्रति, मैं शुक्रगुजार हूं ऐसे संवेदनशील प्रधानमंत्री के प्रति जिन्होंने जनता की संवेदना को समझा और बिना किसी मूल्य का, बिना किसी शुल्क को लिए उनके उस रोटी का इंतजाम किया। जो समृद्ध लोग थे उनके कपड़े का इंतजाम किए, बाकी जो और बड़े लोग थे उनके रहने का इंतजाम किए। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया के एक निराला अपना भारत देश है, जो ऐसी आपदा आई, लेकिन जो जितना सामर्थ्यवान था, कोई रोटी के लिए आगे बढ़ा, कोई कपड़ा के लिए आगे बढ़ा, कोई मकान के लिए आगे बढ़ा, कोई उनको शरण दिया, कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई चिकित्सा के लिए, कोई शिक्षा के लिए, कोई रक्षा के लिए, जिसकी जैसी सामर्थ्य थे सभी मिलके आगे बढ़े। अभी हम बात करें कि कोविड के समय प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना की गई थी, जिसमें लोगों ने पैसे दिए जिससे जरूरतमंद की सहायता हो सके। आपने देखा होगा जो कि रतन टाटा है, रतन टाटा ने अपने किसी भी एम्प्लॉय का वेतन नहीं काटा, किसी भी एम्प्लॉय को नौकरी से नहीं निकाला, सभी को यथावत रखा। और यही नहीं किया, समाज में सच के हीरो रतन टाटा बने कि लोगों के लिए जितना अधिक से अधिक हो सकता है लोगों को डोनेट किया, जितनी मदद कर सकते उतनी मदद कर दिया। राहत कोष में जितना प्रधानमंत्री राहत कोष में दे सकते धन उतना धन दिया। इससे अन्य लोग को भी मोटिवेशन मिला, अन्य लोग भी मोटिवेट हुए और अन्य लोग भी आगे आए। तमाम ऐसे उद्यमी हैं जो केवल अपने व्यवसाय और उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। शायद वो लोगों के लिए हीरो नहीं है, लेकिन बचपन में हम लोग बहुत छोटे छोटे तब सुना करते थे टाटा और बिरला। लेकिन इस महामारी में, इस आपदा में, इस विपत्ति में जो टाटा को देखा, जो बिरला को देखा, जो टाटा की सोच को देखा, कार्यप्रणाली को देखा, जो व्यवस्थाओं को देखा, सच में ऐसे लोगों को सलूट करना चाहिए। ऐसे लोग सच में लीडर ऑफ सोसाइटी हैं, ऐसे लोग समाज के हीरो हैं, जिन्हें समाज अपना नजीर मानता है, उदाहरण देता है। इनकी जो संवेदनाएं हैं वो जमीन पे आकर के, धरातल पे आकर के लोगों के बारे में सोचती हैं। और मैं सलूट करता हूं ऐसे लोगों को, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे अनेक रतन टाटा, ऐसे अनेक लोग इस धरा पे जन्म ले जो लोगों के लिए सोचे, न सिर्फ अपने लिए सोचे। आपदा आने पर कम्युनिकेशन का ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे आपदा से प्रभावित लोग अपने परिजनों से संपर्क स्थापित कर सकें। जैसे ऐसी विपत्ति आती है, भूकंप आता है, तूफान आता है, बाढ़ आता है, तो हम संचार माध्यम से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमारी तात्कालिक व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि राहत के लिए, क्योंकि जब व्यक्ति परिजन से बिछुड़ता है तभी वो परिजन के महत्व को समझता है। एक छोटी सी कहावत है, क्योंकि मैं पूर्वी अंचल को बिलोंग करता हूँ, कहा गया ऊका जाने पीर पराई जेके पांव फटे न बवाई। अर्थात जो दर्द को झेला रहता है वो दर्द को समझता है, वो पीड़ित की मदद करने के लिए फिर आगे बढ़ता है। लेकिन जिसने दर्द को जाना ही नहीं है वो दर्द का मर्म भी नहीं जानता है। इसलिए
जरूरत इस बात की है कि जब कोई व्यक्ति अपने परिजन से बिछोड़ता है, जब किसी व्यक्ति के ऊपर संकट आती है, जब कोई व्यक्ति के ऊपर मुसीबत आती है, सबसे पहले जो उसको राहत मिलनी चाहिए, अपने परिजन से संपर्क स्थापित करने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे अपने परिजन के संपर्क में आ सके। सबसे बड़ी उसकी टॉनिक, सबसे बड़ी मेडिसिन वही होता है जो अपने परिजनों से वो बात कर लेता है, हाल चाल पूछ लेता है। वो कोई डॉक्टर नहीं है जो उसे मेडिसिन दे सके, लेकिन जो संवेदना का शब्द होता है वो इतना बड़ा होता है, शायद वो मेडिसिन से भी कहीं ज्यादा वो लाभकारी होता है। फिर हम बात करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ प्लानिंग, माने क्या हम करेंगे यदि ऐसी आपदाएं आ गई, कौन से ऐसे प्लान बनाए जाने चाहिए जिससे आपदाओं से बचा जा सके। जैसा मैंने बताया या पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि इस आपदा को रोका नहीं जा सकता, इस आपदा को खत्म नहीं किया जा सकता, इसे फुल स्टॉप नहीं किया जा सकता है, लेकिन रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, बचने के अनेक उपाय खोजे जा सकते हैं। इस प्लानिंग के मुख्य रूप से कुल 3 स्तंभ है जैसा मैं समझता हूँ। सबसे पहले गवर्नमेंट, जो सरकार होती है, उस सरकार की यदि संवेदना है, जैसा भारत में हम रहते हैं और अपनी भारत की जो वर्तमान सरकार है, मैं कह सकता हूँ कि यदि संवेदनाओं में 100% अंक देना हो तो शायद 100% हम जैसे लोग देंगे, क्योंकि सरकार ने पूरी संवेदना का परिचय दिया है। और जो भी तत्काल हमारे पास महामारी आई, जिस महामारी से हम गुजरे हैं, और शायद हम खुश नसीब हैं जो मुझे तो जिंदगी मिल गई, वो बदनसीब हैं जो इस महामारी को नहीं झेल पाए और वो इस धरा से चले गए। तो मैं इसके प्रति, अपने जीवन के प्रति शुक्रगुजार हूँ सरकार को, जिनकी वजह से मैं या हम जैसे लोग बचे हैं, जो आपसे सीधा इस आपदा पर, इस डिजास्टर पे संवाद कर पा रहे हैं। दूसरा होती पब्लिक, लोग बाग। वो लोग बाग हैं कैसे? अभी आपने पीछे देखा अफगानिस्तान की स्थिति, आपने देखा तालिबान की आपने स्थिति देखा, श्रीलंका जैसे स्थान की स्थिति देखिए, अन्य जगह यूक्रेन और रूस को आप देख रहे हैं कि एक तरफ जान माल की बचाव के लिए लोग हाहाकार मचा हुआ है, दूसरी तरफ एक की जान लेने के लिए दूसरे लोग बंदूक की गोलियां ताने हुए हैं। हमें ऐसे मुसीबतों से भी सीख लेना चाहिए कि हमें ऐसी कोई परिस्थिति अपने यहाँ उत्पन्न होनी चाहिए, चाहे वो धर्म के नाम पे, चाहे वर्ण के नाम पे, चाहे संप्रदाय के नाम पे, जिससे लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। एक दूसरे के दुश्मन बनने से बेहतर है एक दूसरे का साथ दें, और एक दूसरे का जितना साथ निभा सकें शायद वो ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि हम यदि मनुष्य हैं तो मनुष्य में सबसे पहले मनुष्यता होनी चाहिए, और यदि मनुष्य में मनुष्यता नहीं है उसे भी मानव कहलाने का हक नहीं है। तीसरा है हॉस्पिटल। कोरोना महामारी ने अपने विराट रूप में अस्पताल की कमी पड़ गई थी, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल रहा था, और जो लोग जीवन मृत्यु से लोग लड़ रहे थे, हाहाकार मचा हुआ था। ऐसी स्थिति में जो पहले जो समृद्ध लोग होते थे, समाज में जो कुछ करना चाहते थे, वो 2 चीजें थी, एक शिक्षा, दूसरा चिकित्सा। लोग शिक्षालय खुलवाते थे, विद्यालय खुलवाते थे, पाठशालाएं खुलवाते थे, ताकि वहां की जनता पढ़ सके, जागरूक हो सके, शिक्षित हो सके और अपने अधिकार के प्रति सचेत हो सके। दूसरा, अस्पताल को खुलाते थे, चिकित्सालय को खुलवाते थे, जिससे सभी को जीवन मिल सके, बीमारियों से उनकी मृत्यु न हो सके, उनका जीवन रक्षा हो सके। आज जरूरत फिर ऐसी है, क्योंकि आपदाएं बता के नहीं आती। जैसा आपने सुनामी देखा, जैसा आपने भूकंप देखा गुजरात का, जैसा आपने तूफान देखा उड़ीसा का, ये सारी चीजें बता के नहीं आती। कोरोना अभी आया था, ये बता के नहीं आती, ये आकस्मिक रूप से आएंगी। और हम ये नहीं कह सकते कि अभी यदि हम जीवित हैं, बचे हैं सकुशल, तो आगे भी हम जीवित रहेंगे, बचे रहेंगे सकुशल, ये कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन आगे बीमारियां कब आ जाएंगी ये हम नहीं जानते। तो जरूरत इस बात की, इसके लिए अलर्ट भी अलर्ट, हम कैसे अलर्ट रहें जिससे आगे इस तरह की कोई आपदाएं आती हैं, इस तरह की कोई डिजास्टर आती है, तो उनका हम मुकाबला कर सके। तो हमें इस बात की, यदि मैं बीइंग स्टूडेंट्स हूँ, यदि उसकी मैं शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी हूँ, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि समाज में इस शिक्षा का प्रसार करें, लोगों में खुद से मूल्य विकसित करें और बताएं। सब कुछ लाभ के लिए नहीं होता है। जिन पूर्वजों ने पेड़ को लगाया था, बगीचों को लगाया था, लगाया उन्होंने था, मेहनत उन्होंने किया था, परिश्रम उन्होंने किया था, लेकिन उसका फल आज हमें मिल रहा है, टहनी आज हमें मिल रही है, लक्ष्मी आज हमें मिल रही है, लाभ उसका हमें मिल रहा है। उसी तरह से हमें भी ये कार्य करना है कि हम वो कार्य करें जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिल सके। ये श्रृंखला बननी चाहिए, चैन बननी चाहिए, जो पिछले 1 या 2 या 3 दशकों में ये चीजें शायद हमने अपने निहित स्वार्थ में हम उसे भूल गए। तो मित्रों, बंधुओं, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ऐसे विषयों पे
डिस्कशन होनी चाहिए, ऐसे विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, ऐसे विषयों पर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। जो लोग भी आभासी मंच के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पे सम्मिलित हुए हैं, जो लोग भी जिन लोगों को हमने सुना है, जो लोग हमें सुन पा रहे हैं, आज हमारी इस व्याख्यान का, हमारी चर्चा की सार्थकता शायद 1% भी तभी कही जाएगी जब लोग सचेत होंगे, जब लोग जागरूक होंगे, जब लोग इन आपदाओं को स्वीकार करने के लिए खड़े होंगे और आपदाओं को चुनौती के रूप में एक्सेप्ट करेंगे और वो मानेंगे कि ये आपदाएं फिर से आएंगे, लेकिन उसमें जान माल का खतरा कम से कम हो, नुकसान कम से कम हो, हम अपनी रक्षा कर सके, दूसरों की रक्षा कर सके, राष्ट्र की संपत्तियों की रक्षा कर सके। तो प्रकृति ने हमें विरासत में चीजें दी हुई है, उसको कितना अधिक से अधिक बचा सके। पुरुषों की एक बात से मैं बहुत अच्छी परिचित हूँ और बड़ा मैं उसका मैं प्रशंसा करता हूँ कि प्रकृति की ओर लौटो। मीन्स प्रकृति से ही हमने जन्म लिया था। अर्थात जब आपने देखा होगा हमारे धर्म के हिसाब से लोगों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। जब आग की व्यवस्था नहीं थी तो लोग जमीन की खुदाई करके कब्र में दफन कर दिया करते थे। जब आग की व्यवस्था हुई तो फिर हमें शौदाह किया जाने लगा, लेकिन जब हमने और तकनीकी रूप से विकसित कर लिया तो इलेक्ट्रिक सौदाह बन गए हैं कम समय में। अर्थात जो ये परिवर्तित मूल्य है उसे हमें स्वीकार करने चाहिए और स्वीकार करने के साथ ही वो सर्वमान्य व्यवस्था है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। तो मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि इस विषय का जिन्होंने भी चयन किया उन सभी रणनीतिकारों के प्रति मैं साधुवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस विषय में चंद शब्द बोल सकता हूँ, उनके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और जिनसे सुन करके मैंने कुछ सीखा है उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और जिन लोगों के इस टेक्निकल सपोर्ट के माध्यम से मैं अपनी बात कई बार व्यवधान होने के बावजूद भी फिर जुड़ा, हार नहीं माना, मैं उन सभी के प्रति हाथ जोड़ करके नतमस्तक होता हूँ, शुक्रगुजार होता हूँ कि आपने हमें मौका दिया, हमने आपसे अपनी बात रखा। यदि मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप सभी के लिए ढेर सारी प्रणाम, ढेर सारा शुभकामनाएं। और यदि मेरी कोई बात बुरी लगी हो, कोई बात मेरी ऐसी लगी हो जो कि आपको बुरी लगी हो, मैं उसके लिए दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ। यदि आपको मेरी किसी बात से तकलीफ हुई हो तो मैं देख रहा हूँ कि शायद अब मैंने समय कुछ ज्यादा ले लिया है, आगे फिर वक्ताओं का समय है, तो मैं एक बार आप सभी के लिए फिर साधुवाद देते हुए सादा आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। डॉक्टर हमेंद्र कुमार सर, थैंक यू। आपने अभी जो बात की, एक्चुअल में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एंड कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती एंड सो समटाइम्स मैंने टेक्निकल इंस्टीट्यूशन साइड से नहीं होती, इट्स गवर्न बाय अदर बॉडीज, क्योंकि नेट का इशू रहता है और ऑनलाइन का इशू रहता है, तो कोई ऐसे वो उसमें घबराने की बात नहीं, बिकॉज वी आर फैकल्टी मेंबर एंड but your lecture was very good. Thank you sir. Really मुझे क्योंकि आज जो सेशन है इसमें हम लोगों ने चर्चा की जहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो रियली अगर हम देखें डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें और आज इंटरनेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डे है और इस ओकेजन पे वी आर जस्ट सेलिब्रेटिंग दिस डे कि हाउ कैन वी जस्ट रिड्यूस द रिस्क। ये हमारी जो मेन थीम है आज की कि हम रिस्क को कैसे यूज करें डिजास्टर का। एंड द प्राइमरी गोल ऑफ इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डिजास्टर, तो यही है कि रिस्क रिडक्शन होना चाहिए और रिस्क को रिडक्ट कैसे करें। बट व्हेन दैट कभी कभी इस तरह के हो जाते हैं कि ये हैपन हो जाता है कि व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल देन इट इज इम्पॉर्टेंट टू मिनिमाइज द हार्मफुलनेस जो होगी उसकी, चाहे वो किसी हार्म पीपल हो रहे हो या कोई एसेट हो रहा है या लाइवलीहुड है, थ्रू अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो वी कैन जस्ट मैनेज द अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो सो वी कैन जस्ट रिड्यूस द रिस्क थ्रू द प्रॉपर एजुकेशन अवेयरनेस, ये माध्यम हम कर सकते हैं। एंड बिकॉज इट इज ए स्पेशली इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ सडन ऑनसेट या फास्ट मूविंग हजार्ड सच एज tsunamis, cyclone,
volcanoes eruption, and but also the relevant to slower the hazards such as uh, drought and the disease outbreaks. It is not enough for a early morning system to correctly identify a incoming hazard, but it is must also ensure that the pol- uh, we can say the sectors that are risk can receive the alert, understand it, and most importantly act on it. So ये जो issue है, this is the very different kind of issue, क्योंकि हमारे हाथ में सारी चीज नहीं होती, लेकिन when the WT was just World Trade, उसमें the United Nations General Assembly has just designation 13 October as a International Day for the Disaster Risk Reduction to promote a global culture for the disaster risk reduction. So our university is doing the such program to just aware our students, our community, how can we just reduce the risk. That is the important, and it is an opportunity to acknowledge the progress being made towards reducing disaster risk and losses in lives, livelihoods, and health in the line with the international agreement. Thus, the important document was just given by the United Nations General Assembly, and that was the Sendai Framework of Disaster Risk Reduction 2015 to 2030, and it was adopted by in March 2015. So it is a very important. How if you will read these documents, if listener will read this document, what is the how we reduce the risk when the Sendai framework has the 7 strategies target and 38 indicators for the measuring progress in reducing disaster risk and losses. And there are so many types of disaster. There are such as flood, cyclone. साइक्लोन जो आप देखते हैं, कभी कभी साइक्लोन आ जाते हैं या सूखा पड़ जाता है, अर्थक्वेक्स हैं, कोल्ड वेव्स हैं, थंडर स्टॉर्म है, हीट वेव्स हैं, मड स्लाइड्स हैं, लैंड स्लाइडिंग है, स्टॉर्म है, मेजर सम मैन मेड डिजास्टर इज देयर, सेटिंग ऑफ फायर्स है, एपिडेमिक है, डिफॉरेस्टेशन है, पॉल्यूशन ड्यू टू द प्रॉन कल्टीवेशन है, केमिकल पॉल्यूशन, wars, road and train accident, also the disaster, riots and food poisoning and industrial disaster crisis and environment production, so pollution. So these are the so many types of disasters. Just we just familiarize with these things. So this both speaker has have just focused on the issues and what are the challenges and how can we reduce the risk. So I thanks to both the speaker really. I first of all, because it's my responsibility to thanks to both, because very short and very I humble. I have just made the humble request to both the speaker and they accepted to just to discuss about this burning theme, because we are just facing the so many such type of we can say risk in past. In our past. Suppose there is a one state is Uttarakhand, and recently there was a landsliding, and I think more than 37 people were killed in that particular incident. So how can we reduce the risk? That is the important thing. So in the last but not least, I propose my vote of thanks in the behalf of the Swami Vivekananda Subharti University. And first of all, I deem it a great honor and privilege to propose to vote of thanks on great occasion. Let me first of all start by giving the glory to the Almighty God for making today's occasion is a great success. So it is ये परंपरा भी है जहाँ हम शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता की बात करते हैं, तो हमें इन चारों को लेके चलना पड़ता है कि शिक्षा हम अवेयर करें स्टूडेंट्स को, अपने पार्टिसिपेंट्स को, संस्कार हम दें कि हमारे संस्कार में हो कि मैन मेड जो नेचुरल डिजास्टर है उनको रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है, और जो हमारी सेवा है कि हाउ कैन वी जस्ट हम उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाएं उनको जब कोई रिस्क में आ जाता है, और राष्ट्रीयता है कि उस समय सब एक साथ होके एकजुट होके जहाँ पे भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है सब आगे हैं, तो सो वी कैन जस्ट हम यूनिवर्सिटी का जो मोटो है उसके साथ भी काम करते हैं. So if I because in the initial stage, I thanks to honorable Vice Chancellor Professor G.K. Thaplyal sir for his kind permission to conduct this guest lecture.
and word of encouragement. And he also focused on the risk, how to minimize the risk of disaster. Yeah, how can we just reduce the risk through proper education and well execution of the risk reduce plan to settle the life of individual of the society. I thank you, sir. I also express my heartfelt thanks to our Honorable CEO, Professor Dr. Saileras, for his direction, support, and vision. Without her vision, we cannot move further. And I thank you. I thank also our expert of great guest lecture, Dr. Lakshman Singh Kandari, and who, despite his busy schedule, had taken the time and immensely contributed to this event. I thank you, Dr. Lakshman. And there was some issues was there, but don't worry. In future, we will just again move ahead with this short of we can just so again हम इसमें अच्छा से अच्छा करेंगे. So don't worry because it is a not it is also disaster. So how can we just reduce this risk technical to technical issues? I also very thankful to Dr. Heminder Kumar Singh, and he is from the Lucknow University, and I just on call to the Dr. Heminder, and he accepted this thing, and very nicely he just deliver his lectures. So I thank you, sir. Definitely, audience, highly informative. It was a highly informative presentation you have just given today in this webinar, and thank you, sir. And hopefully, we will just meet again the new platform, new topic. Okay. I also thanks to our dean, Professor Sandeep Kumar, in his support and cooperation. We just conducted this event this time. Thank you, sir. And I also thankful to Dr. Mukesh Rohela. He is the chairman of University Environment Committee, Swami Vivekananda Subharati University, for collaborating with us as well as the throwing the light on the topic of today's webinar. Thank you, Rohela sir. I also express my heartfelt thank you to Dr. Mumtaz Singh. He just moderated this event very nicely. He coordinating the last 7 days from all the speakers, IT teams, and I also thanks to Dr. Viva Lakshmi, and she also just made these sessions very successful, and both are very motive all the participants, those who are just listening we in as a live mode. I also thanks to faculty member of the Department of Education for their efficient discharge of responsibility to make this event a great success. I thank to online audience and student for being a wonderful listener. Thank you all of you. And but last but not least, my sincere thankful to market and communication department, especially we can in short form we can get to Marco, for the working behind the scene to make this event a resounding success. Thank you all of you again. Hopefully we will meet again with new platform, and again I Jai Hind to all.